Ji Rabia, everyone is here. Sharon ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone, and thank you to the analyst briefing for agropolymers and chemicals for the first quarter 2025. Um, we can get started now. It's 4:03. So everyone's probably seen the results. In terms of the key highlights, the financials have been uploaded. Revenue for agropolymers for the first quarter was around 18 billion rupees, up around 8% versus same period last year. Profitability slightly up, well, loss slightly better than last year, first quarter, 0.8 billion. And yeah, the LPS also correspondingly slightly better. In terms of scale, market cap at 35 billion, total employees 540, and total assets 105 billion. अब इसमें हाइड्रोजन peroxide और HTDC के assets भी आ गए आगे आ जाए. I'm sure most of you are very well aware, but a quick refresher that the key drivers of the business. So international PVC prices and ethylene prices, which constitute the core delta, are the main drivers of the agropolymer business in terms of the primary market. So neither China nor US demand in construction has not really picked up in the last year and counting. India last year was the major demand hub. So a lot of global trade in PVC and other construction items was going towards India. But that remains to be seen how long India will also continue with that. In China, the PVC market is continuing to face a property market downturn, and the trade concerns with the US don't help the situation because I think buyers or residential investors are even more careful in China right now in terms of committing to a real estate investment. So, in the background of all of this, we've also had ample supply come in. So, additional supply of around 1 million tons came in. New supply of PVC came in China last year. That the market globally has also absorbed amid the weakening demand. So, that has further contributed to the downward trend in the price that we have witnessed in the last 6-8 months. On the way forward, what we see is that the potential impact of the US tariffs and India's upcoming anti-dumping duty are expected to strain the supply-demand balance. So, China and the US, we all know they're in the middle of a pretty intense trade fight. And until that is resolved and the market has clarity on next steps and the direction in which the trade war and the tariffs are expected to head, this volatility will continue and the PVC prices, in fact, most of the construction sector and the other major sectors will be on a flattish, bearish trend. It is expected that in the second quarter, which we are in currently, all of these issues should resolve. ऊँट किसी करवट बैठ जाना चाहिए. Currently, PVC prices stand at around $700 per ton. In terms of the core delta, you will see that the core delta graph also directionally follows the PVC prices graph. Ethylene prices have remained range bound between $910 and $940 per ton, and market sentiment is subdued. So there are losses in the upstream crude and naphtha markets, and with downstream sectors also weak, the market sentiment is down, and it has an impact on ethylene prices also. So core delta very much under pressure, and it's at $240 per ton in March of this year. यही अगर आप देखो first quarter of last year was around the same, $270 to $80 per ton. Second quarter of 2024 we saw some revival, but that has also slid down third quarter onwards. Where do we see this going? So the decline in the international ethylene prices has improved the core delta, and in the coming months we expect PVC, at least in second and third quarter, to remain range bound and ethylene prices directionally lower trending. So we expect core delta and margins to remain on the same levels somewhat as we saw in the first quarter of 2025. Fourth quarter में some recovery is expected as construction historically has done better in the fourth quarter.
On the domestic front, the PVC market continues to grow, the domestic PVC market, and the reduction in the interest rates that we have seen over the last 6 months is expected to boost real estate activity and result in some upward movement in construction in the country. Next. Other than ethylene, the other major uh, cost that agropolymers has is actually gas cost. And as you must all be aware, we get captive power gas for captive power production. And over the last 3 months, the captive gas price has increased in February to around 3,500 rupees per MMBTU. And effective March 2025, a levy has been notified on top of captive gas for gas molecules meant for the captive power plants or industry. So that's around 791 rupees per MMBTU. So the industry has challenged the application of this levy in the courts, and this matter is sub judice. So I will not talk about the levy, but the matter is sub judice and in the pending in the Islamabad High Court for now. Processed gas price remains unchanged, and so given depletion of indigenous gas reserves, the availability of gas at competitive prices remains a challenge. As a company, we are actively exploring different alternate power options. We are talking to government ministries who are able to help, whether it's gas availability for gas captive power needs, any other alternate power options that might be suitable for agropolymer in an industrial size of agropolymer are being explored. Next. So in terms of business updates, next. Segment-wise quarterly performance. So compared to last year, a slightly bigger chunk of our top line came from the chloralkali business, and 78% came from PVC versus 80% last year. And in terms of PAT, the chloralkali business demonstrated a higher PAT versus on a segment basis versus the PVC business. Of course, the PAT is a function of some allocation of costs, shared costs. So the bigger it's on a contribution margin basis, both the businesses are positive. In terms of production, the PVC and caustics and VCM production were higher than last year because last year, first quarter, we had taken a turnaround. As we speak, we are currently in the middle of a turnaround. You must have seen the notification in the stock exchange. So we are currently kicking off our outage at the plant right now. Next. The PVC sales volumes, the PVC domestic market has grown by 23% year on year. So if you look, we sold 45 KT in first quarter last year and 54 KT this year. Also, last year ki comparison mein we have seen that the market is slightly larger and imported resin remains competitive. And with the flattish and downward trending prices, we've had to use aggressive pricing strategies to limit import inflows with some sign of success, but imports are very much a part of the domestic industry right now. Public project spending has remained sluggish, so only around 28% of PSDP funds have been disbursed to date over the last 8 months. Our segment-wise domestic sales primarily continue to focus on the construction sector. 53% goes to pipes and fittings, almost as much as before, and around, for example, 7% goes to profiles, 8% to cable compound, all part of the construction sector. Next. In terms of the chloralkali business, what we have seen in the first quarter is a slight increase in the caustic prices with tight supply conditions early in the quarter, which supported the market before moving to a more balanced state near the end of the quarter. We expect an increase in the supply globally due to startup of new capacities in China, Southeast Asia ki taraf. New alumina capacities are also expected to come online to bump up demand, partially offsetting this supply increase in South Asia. Other than that, for agropolymers and for the local businesses, increasing gas costs continue to adversely impact margins.
but the domestic market remains balanced between Sitara, Ittihad, Anglo Polymers, and Nimmer Chemicals. Consolidated performance अगर मैं देखूं Q1 '25 versus Q1 '24, so around 8% higher revenue versus last year. We have sold, like I said, around 10 KT more of PVC this quarter in 2025 compared to last year. EBITDA also slightly higher than last year. Double lag to raha hai 1 versus 2, लेकिन I would say slightly higher because last year sales were much lower and that obviously had an impact on that also. So revenue growth was primarily driven by improved domestic sales this year, 10 KT, and partially offset by lower PVC prices, around I think $50-70 ka negative impact hai of PVC prices. PAT or LAT also 9% better. I would consider this pretty much flat actually. And primarily what the company is doing, and you can see it in the financial statement also, is just a very competitive pricing strategy along with stringent cost optimization measures to streamline our business structure to weather this storm. Next. What do we see in the coming quarters? So the projects, Alhamdulillah, have been safely commissioned. The hydrogen peroxide in February 25 and the HTDC project in March 2025. Operations have stabilized, sales commissioned as planned, and the businesses have taken off. HTDC ki obviously koi product nahi nikalta, but we see the impact of the projects in our financials now in April once they're stabilized. And hydrogen peroxide also, we have started entering the market with saleable products. So safety, key focus on ensuring safe and sustainable operations. And we're working on and making substantial transformations in process safety with a continuous drive for safety excellence. In terms of PVC, there is ample supply in the market and a bearish, stable trend is expected in global PVC prices, especially for the next few quarters. Domestically, we do expect that economic conditions will improve with GDP growth at around 3% on the back of a reduction in the inflation and interest rates. कुछ तो growth आएगी in the local markets. Ethylene prices are also expected to see a bearish trend. Caustic May sales improved on a year-to-year basis domestically, and the textile sector may be around a 7% growth versus last year. The first 8 months of this year, so third and fourth quarter of last year, so to speak. So that's a positive demand for the caustic business, especially in the export-oriented sector. Hydrogen peroxide, we are now focusing on promoting the project and building partnerships with key stakeholders to sell our products. So we target all segments, EFS and non-EFS for now. Finally, gas price has increased, like I said, to around 4291, 3,500 rupees per MMBTU plus a levy of 791 rupees. And we are evaluating multiple different options, including efficiency of our existing projects, gas power production facilities, to see where we can find avenues for efficiency and betterment of the business financials. Next. So if you can have questions and answers now, you can close this. आसिफ हबीब का सवाल है, वो ले लेते हैं. सॉरी जी मुनाफ, अब तो मैंने पूरी प्रेजेंटेशन कर दी इन इंग्लिश. अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ लेना. जी आसिफ साहब. वालेकुम अस्सलाम. मैम आप थोड़ा गाइडलाइन लेनी थी कि ये एग्रो पॉलीमर की जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है वो पास्ट में भी इतनी लंबा अरसा प्रोलॉन्ग हुई है ये. और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अनाउंसमेंट हुई है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो वो टोटल सेल्स का मैम कितने % होगा और नेक्स्ट क्वार्टर में उसकी अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होगा? क्योंकि एज इन्वेस्टर हम सारे लोग ही विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस और पे आउट्स काफी सफर कर रहे हैं लोग. वैसे ये दो क्वेश्चन. आसिफ साहब, लाइक मैंने बोला था ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑल्सो, फोरकास्ट ये है कि प्राइस और कोर डेल्टा और एथिलीन प्रोबेबली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स तो यही ट्रेंड फॉलो करेगी.
कंस्ट्रक्शन डिमांड को पिकअप करना होगा ग्लोबली, यूएस में भी करना होगा, चाइना में करना होगा। द किसी करवट ये जो ट्रेड वॉर्स का ऊंट है इसको बैठना होगा। टैरिफ्स लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं तो कितने लग रहे हैं, लग रहे हैं तो कितने लग रहे हैं। वरना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड इनफैक्ट मोस्ट business activity will take off once this is once there is sight on this. In terms of hydrogen peroxide, जी बिल्कुल, February 15th के आसपास प्रोजेक्ट कमीशन हुआ है। तो वाइल हमने थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया है सेल, आपको सेल का ज्यादा बल्क नजर आना शुरू होगा इन द मार्जिन्स फ्रॉम द सेकंड क्वार्टर इंशाल्लाह। जी भाई, अकील रज़ाक साहब। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 3-4 क्वेश्चन है छोटे छोटे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कास्टिक सोडा के सेल्स वॉल्यूम फर्स्ट क्वार्टर में क्या हुए हैं अगर ये बता सकें, और एक्सपोर्ट फ्रंट में आप पीवीसी और कास्टिक सोडा में आपने कुछ कुछ सेल्स की है फर्स्ट क्वार्टर में, और रुक इसके जाए, अलावा। एक एक करके सवाल ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है लिखने के लिए। आपने कहा कॉस्टिक सोडा की सेल कितनी हुई? वही जो हर दफा हर क्वार्टर में हमारी आप निकाल लें इंडस्ट्री का 20-30% जो हमारा मार्केट शेयर बनता है वो हमारी सेल होती है। दूसरा सवाल आपका क्या था? एक्सपोर्ट वॉल्यूम। जी जी। तो पीवीसी की एक्सपोर्ट करंटली जो प्राइस चल रही है $700 पे, बिल्कुल वारे नहीं खाती, तो एक्सपोर्ट तो हम नहीं कर रहे। कॉस्टिक के कुछ कार्गोस हमने निकाले हैं अपॉर्चुनिस्टिकली, जो कॉस्टिक कम के ग्लोबली भी प्राइसेस थोड़ी बेहतर है, तो कॉस्टिक के निकाले। सही है। अच्छा, आ, गैस की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है जैसे आपने कहा, और आपका कैप्टिव के अंदर में अजम्पशन है कि 80% गैस यूज़ होती है। तो जैसे मैं अगर इतिहाद को देखूं तो वो लोग वापडा पे शिफ्ट हो गए हैं, जो जो मालूमात है उस हिसाब से सितारा एक अपना कोल पावर प्लांट लेकर आ रहा है, और इतिहाद वाले बायोमास की तरफ भी जा रहे हैं। तो आप लोग क्या के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो सकते हैं, या कोई दूसरा ऑप्शन है? इन सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में इस तरह के गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस काफ़ी कम कर दी है, तकरीबन 32 रुपीज़ पर यूनिट के करीब अब हो गई है। तो इससे आप लोगों को एडवांटेज होगा, आप लोगों को पता ही है। मेरा इसके बारे में कुछ कमेंट्स कर दें। जी अकील, तो जहाँ तक पावर का की बात है, ग्रिड पावर ऑब्वियसली एक चीज़ है जो हम एक्सप्लोर करते रहते हैं। हमारे पास अभी ग्रिड का कनेक्शन नहीं, क्योंकि हमारा जो पीवीसी और वीसीएम का प्लांट है काफ़ी सेंसिटिव है, प्रोसेस प्लांट है, और इसकी रिलायबिलिटी की बहुत सख्त कंडीशंस होती हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो एक स्टैंडअलोन क्लोरैल्कली यूनिट या कॉस्टिक का प्लांट कर सकता है, वो पॉलीमर्स का प्लांट अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही कहा कि 80% कॉस्टिक की कॉस्ट जो है वो पावर होती है, लेकिन कॉस्टिक का बिजनेस एंग्रो पॉलीमर का कोई 20% बिजनेस है। हमारा मार्जिन तक अगर आप देखें ना, तो 80% ऑफ आवर बिजनेस रिलेट्स टू द पीवीसी मार्केट, पीवीसी सेक्टर। So while it's a very significant and real part of our business model and business वो हमें पूरा देख के चलना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल बायोमास एंड अदर सच इंटरवेंशंस डोंट वर्क फॉर अस, वो रिलायबिलिटी और रिडंडेंसी के कंसर्न्स और इश्यूज आ जाते हैं। दैट बीइंग सेड अकील, हम काफी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, सस्ती गैस एक्सप्लोर कर रहे हैं, हुकूमत से बातचीत चल रही है, हम कोल भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ग्रिड भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, सोलर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। करंटली ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट या एसेट में कौन सी एफिशिएंसीज लाई जा सकती है कि हमारी पावर प्रोडक्शन कम हो जाए, कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन। ओके। जैसे एक एचटीडीसी का प्रोजेक्ट अभी ऑनलाइन आया है, इट्स एक्सपेक्टेड टू सेव अराउंड 1 MMBTU पर टन इन आर ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट। सो ऑब्वियसली उससे भी एक सेविंग आएगी। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिलेटेड है कि आप अगर हम्म। क्वार्टरली वॉल्यूम्स अगर शेयर कर सकें कि इस क्वार्टर के अंदर में जो सेकंड क्वार्टर CY25 का होगा, कितने आप वॉल्यूम सेल कर सकेंगे? साथ में जो मार्केट सोर्सेज से पता चला कि डॉल डॉल ने भी प्राइजेस को 164 रुपीज़ पर केजी कर दिए, आपके आने के साथ ही डिक्रीज कर दिए। उससे उससे आप लोग क्या देख रहे हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड? और थर्डली, जो बांग्लादेश से ख़ास तौर पे इम्पोर्ट होता है सोमेडा कॉम्प्लेक्स वगैरह से, उसके अंदर भी प्राइसेस काफ़ी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है ड्यू टू टैरिफ वगैरह की वजह से। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंट्रीब्यूशन आप लोगों की गोइंग फॉरवर्ड कितनी होगी, और सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर के वॉल्यूम्स क्या होंगे? तो अकील, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन वॉल्यूम्स फॉर सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर, लेकिन इस साल फॉर एग्जांपल मुझे कोई
28 केटी का प्लांट है, तो आप समझ लो अराउंड 10-12 केटी तो बेचने का हमारा इरादा है. We will be capturing the market and we'll be working on it. So that is where we stand right now in terms of the market that we're looking to capture and sell to. उसके obviously that depends. पहला साल है, घुसते ही तो छूटते ही तो you don't get the entire market, so we're taking it incrementally. As far as doll is concerned, market dynamics कुछ ऐसी हैं, just like PVC, HPO की prices are also set by global prices. तो global prices गिरी है, तो doll has had to decrease its prices downwards. ये हमारे आने ना आने से ज़्यादा ये global prices का एक function है. And yes, absolutely, Bangladesh HPO dumping is a huge concern for the industry, especially us and especially us and what's it called, doll, and we are taking care of it in that perspective. Thank you. Ji Minhal. Ji Minhal. I guess सवाल नहीं है. If there's anyone else who has a question. I think most of the questions have been answered. I think Aruba has answered all the questions, so I think on that basis, जी ओसामा, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. आवाज आ रही है? जी जी, मैं पूछा था एचपीओ की क्या सेलिंग प्राइस चल रही है इस वक्त करेंटली, और ओवरऑल फुल ईयर की क्या वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अरुबा, ये जरा आप ग्रुप चैट में लिख देना, so that everybody will get to, if you're sharing. ठीक है जी. So if there are no further questions, Minal, the stay order was vacated, but the matter is currently sub judice on the gas levy. So I think if we're done, we can end this meeting. Osama, your question should be handled in the chat. Thank you. ठीक है जी.